In this segment we will talk about the Newtonian fluid. So what is the Newtonian fluid? Newtonian fluids are those fluids which obey the Newton law of flow, which obey the Newton law of flow. According to Newton law of flow, न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो ने सिंपल सजेशन दिया है. हम उस सिंपल सजेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट आर. वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हम ले सकते हैं, या इसके अलावा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन आर rate of shear strain. So this is the simple definition of the Newton law of flow, that the shear stress is directly proportional to the velocity gradient or rate of shear strain. हम न्यूटोनियन फ्लूइड को सिंपल एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ लिक्विड which is consist of two layer. The upper layer is moving layer, हम इसको नेम देंगे मूविंग लेयर, एंड द लोअर लेयर इज स्टेशनरी लेयर. This is the stationary layer, and these two liquid are separated from each other with a distance r, which is called dr. This is dr is the distance between the two layer of liquid, and a is the area. So if we apply a shear stress, जब हम force apply करेंगे यहाँ से, this is the shear stress. So the upper liquid will become move. जो अपर लिक्विड है हमारे साथ, ये मूव होता है टू द बॉटम, ये मूव होता है टू द बॉटम. दे विल मूव विद रिस्पेक्ट, दे विल मूव टूवर्ड्स द बॉटम विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम. तो जब हमारे साथ जो अपर लेयर है ये मूव होता है, तो यहाँ पे हमारे साथ चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं. जो डी आर डिस्टेंस है इसमें भी चेंजेस आते हैं. तो यहाँ पे एक वेलोसिटी प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम नाम देंगे डी वी. डी वी इज़ द वेलोसिटी. Simple, this dV is the velocity produced after the applied shear stress. So the difference which is produced, the difference of velocity between two layers of liquid, जो टू लेयर्स ऑफ लिक्विड में हमारे साथ जो डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गया ऑफ ईच ऑफ एरिया, ए. यहाँ पे हमारे साथ ये एरिया ए है, हमने नाम दिया था. सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी आर. ये हमारे साथ डिस्टेंस था, विच इज दीज टू लिक्विड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ तक समझ में आ गया. द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी आर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. फोर्स applied
पर यूनिट एरिया। यानी कि जिस तरह हम शेयर स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे इतना ज़्यादा यहाँ पे हमारे साथ वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा इस टू लिक्विड के दरमियान। सो मैथमेटिकली the pores per unit area, this is the shear stress, this is directly proportional to the difference in velocity per distance r. This is the distance r which is separated the two liquid from each other. So we can improve this equation. जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म कर सकते तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट लगा रहे थे, एंड दिस कोएफिशिएंट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, dV divided by dr. So if we want to determine the viscosity, this is the coefficient of viscosity, so n is equal to F divided by A over dV over dr distance. So as we know that the F divided by A is force per unit area is the shear stress. So this is the shear stress, this is the applied force. F divided by A is equal to F, this is the shear stress, and difference in velocity over distance is equal to rate of shear. This G is the rate of shear. This is the shear stress and this is the rate of shear. So ये हमारे साथ हो गया. So we can put this value in this equation. So the viscosity is equal to F divided by G. So this is the general equation for the Newtonian fluid, and this is the viscosity, and this viscosity is called coefficient of viscosity. Now the unit of the viscosity is Phase centiphase, and also dynes. This is the smallest unit of viscosity. These two are the smallest unit of viscosity, but Phase are used generally for the unit of viscosity. जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम न्यूटोनियन फ्लूइड का जो रियोग्राम है वो डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम जो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है इस पर भी थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूटोनियन फ्लूइड. So thank you very much.